नमस्ते मेरे दोस्तों, मेरा नाम मिला है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका जीवन कैसे हो? मुझे बहुत 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 खुशी हूँ क्योंकि मैं 2 मंथ्स में भारत जाऊंगी and that's the most happy time of my life. मुझे हिंदी बहुत पसंद है, मैं हिंदी सीख रही हूँ। तो हर हफ्ते मैं एक कुकिंग वीडियो अपलोड करूँगी where I try to practice my Hindi, to speak some Hindi which is full of mistakes, I know, but I'm trying my best. आज हम एक गाजर का केक बनाऊंगा, तो चलो let's make it together. केक बनाने के लिए हम चाहिए 1 कप और 2 टेबलस्पून मैदा, आधा कप और 2 टेबलस्पून चीनी, 3/4 कप गाजर, 1 पिंच हिमालय नमक, थोड़ा वॉलनट्स और किशमिश, 1 पिंच नटमेग और 1/4 टीस्पून cinnamon powder, vanilla, 3/4 soda bicarbonate और 3/4 baking powder, 3/4 cup दूध और 1 टीस्पून नींबू का रस। सबसे पहले हम सूखी सामग्री को एक साथ मिलाते हैं। मैदा, वनीला, बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर और सोडा बिकार्बोनेट, sometimes I break out, और थोड़ा salt, 1 pinch salt. Mix nicely. Add 1 pinch nutmeg, 1/4 teaspoon cinnamon powder, दूसरा कटोरी में चीनी और दूध मिला लें। Add 1 teaspoon नींबू का रस, add तेल, अब आटा का आधा मिश्रण डालें, mix with a whisk. हरे कृष्णा 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 हरे। आप दूसरा आधा डालें और एक स्पैटुला के साथ मिलाएं। And over mix मत करो। अब वॉलनट्स, किशमिश डालें, गाजर डालें, प्लीज ओवर मिक्स मत करो, that's important. केक को 30 मिनट के लिए 170 डिग्री पर बेक करें। एक छोटा कटोरी में थोड़ा नींबू का रस और चीनी पाउडर मिलाएं।
तो केक खत्म हो गया. 30 minutes over. Yay. हम इसे ठंडा होना देने not देने. मैं नींबू का रस और पाउडर चीनी का मिश्रण बनाया है. And I'll just pour over the cake to give a nice lemony taste. अब गाजर केक कृष्ण को करने के लिए तैयार है. So let's offer it. एक गरम दूध के साथ ये एक अच्छा डिनर ऑप्शन सकता है. मेरे दोस्तों दिखाने के लिए बहुत धन्यवाद. अगले हफ्ते मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ. बाय. So soft.